Dear students, I am Shaukat Ahmed Bhatt, teacher, Higher Secondary School, Yunsu. पिछले लेक्चर्स में हमने वेक्टर्स, वेक्टर के टाइप्स वगैरह डिस्कस किए थे. आज हमारा जो टॉपिक है वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स. लेट्स टेक 2 पॉइंट्स P1 एंड P2. P1 के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1 एंड P2 के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2 एंड z2. Vector joining the 2 points, that will be this vector P1, P2 vector. P1, the vector which joins the points P1 and P2, that will be P1, P2 vector. Now, we have to find this vector P1, P2 vector. इसके मतलब ये कैसा वेक्टर होगा? तो P1 जो है इसका पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन, पोजीशन वेक्टर ऑफ P1 होगा x1i P1 and P2 are the 2 points. P1, P2 is the vector which joins P1 and P2. We join P1 with the origin. We join P2 with the origin. Here OP1 is a vector, OP2 is a vector. Now the position vector of P1 with respect to the origin is x1i plus y1j plus z1k. And position vector of P2 is equal to x2i plus y2j plus z2k. Now by triangle law of vectors. Now by triangle law of vectors, we have of P1 plus P1 P2 is equal to of P2. Of P1 vector plus P1 P2 vector is equal to of P2 vector, or P1 P2 vector will be equal to of P2 vector minus of P1 vector, or P1 P2 vector will be equal to of P2 vector means x2i plus y2j plus z2k vector minus of P1 vector x1i plus y1j plus z1k vector, which is equal to x2 minus x1 I vector plus y2 minus y1 j vector plus z2 minus z1 k vector. This is the vector which represents the join of the 2 points P1 and P2, means vector P1 P2 will be equal to x2 minus x1i plus y2 minus y1j plus z. That is vector P1 P2 is equal to x2 minus x1i plus y2 minus y1j plus z2 minus z1k vector. Here हम मॉडल्स इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं. Magnitude of P1 P2 vector is equal to square root of I का जो कोफिशिएंट है इसका स्क्वायर x2 minus x1 स्क्वायर प्लस y2 minus y1 स्क्वायर प्लस z2 minus z1 स्क्वायर. ये इसका मैग्नीट्यूड होगा. This is all about the vector joining the 2 points. और एक बात जो आपको याद रखनी है, a unit vector, if you have to find the unit vector in the direction of a unit vector in the direction of a vector is given by a vector divided by mod of a vector. This is the unit vector which will be in the direction of this a vector. Now we will do some questions from the exercise 10.2. Question है, you have to find the magnitude of the following vectors. यहाँ पर एक वेक्टर है, let a vector is equal to I vector plus j vector plus k vector. You have to find its magnitude. Easy, magnitude का फॉर्मूला मैंने बताया,
therefore मैग्नीट्यूड ऐसे हम लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ आई का कोएफिशिएंट है 1 स्क्वायर प्लस जे का कोएफिशिएंट है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मीन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3 यूनिट्स इसका मैग्नीट्यूड है स्क्वायर रूट ऑफ 3 यूनिट्स इसका मैग्नीट्यूड. In the same way, you can find the magnitude of different vectors. Question number 2 है write two different vectors having same magnitude. दो different vectors लेकिन magnitude same होना चाहिए. Question number 2. Two different vectors but same magnitude. Let A vector is equal I vector minus 2j vector. B vector is equal to 2i plus j. These are two different vectors because their components are not same. I का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, यहाँ I का कोएफिशिएंट 2 है. These are two different vectors. लेकिन अगर हम इसका अब मैग्नीट्यूड निकालेंगे, now magnitude of A vector here is equal to square root of I का कोएफिशिएंट 1 है means 1 square plus J का कोएफिशिएंट है -2 means -2 square which is equal to square root of 1 square हुआ 1 plus -2 square हुआ 4 means square root of 5. Magnitude of B is equal to square root of 2 square plus J का कोएफिशिएंट है 1 square root of 4 plus 1 that is equal to 5. Magnitude इन दोनों वेक्टर्स का सेम निकला square root of 5 लेकिन the two vectors are different, they are not same. Magnitude इनका दो their magnitude is same लेकिन खुद ये